Hello everyone, good evening. Let us start today's class. As we ended yesterday at this point, percentage, I told you that we will be doing income, expenses and savings question. Yesterday when we had a class, we did gain and loss questions. Now today we will be doing and starting with percentage, income, expenses and savings. How to do all these things. This question we will be moving ahead. Now, these type of questions are very common and very important in most of the examinations. Especially in exams like Goa Staff Selection Commission, these type of questions have 95% chance that these type of questions will come. They are interrelated with each other in many ways. If you see how daily we are performing our monthly budgets, so in our monthly budgets, these three things are very important. Like how much is your income, how much you are spending, how much you are saving, and based on this there are many questions which comes in the exam. So let us discuss, let us start doing the questions, some of this kind of questions. Okay, so let us come to question number 1. We will be doing question number 1 first. A person who spends 66 2 by 3%. Now again, this is a very important part. 66 2 by 3%. Now, as I told yesterday, please go to my previous videos and see how we have to calculate all these things. 66 2 by 3, if you see, it is nothing but 2/3 of anything. 66 2 by 3 means 66.66%, which is also denoted as 2 upon 3. It is denoted as 2 upon 3. This also I had done in my previous videos. If you guys want to see, just go to my decimal and fraction video. In that you will come to know how I am calculating this. See guys, calculation is very important aspect in all of the examinations. Without proper calculation or without proper solving, you will not be able to get the hang of it, get the niche of it. So fast calculation is a trick which is very much required in all these exams. So kindly see the previous videos, those students who have not seen, and those students who have forgot, please go to the previous videos to again check on how all these things work. So 66 2 by 3% is my spending. So my expense is 2/3. This is my spending of his income, and he is able to save 1200 per month. Okay, now saving is how much? 1200 per month. Now see, as we all know, my saving, this is the general formula, or I will write it in a big manner. My saving, what will be my formula? My saving will be my income minus my expenditure. This is one small formula which we have to use. My saving will be what? My saving will be my income minus my expenditure. Okay, so now let us again come to the question. Saving will be income minus expenditure. Now my saving is how much? 1200. Okay, 1200. My income is how much? I do not know. My expense is how much? 2 by 3. 2 by 3 of what? 2 by 3 of my income. So let me take my income as X. Let me take my income as X, and my expenditure will then be 2 by 3x. My income will be X and my expenditure will be 2 by 3x. So my saving will be income minus expenditure. Income is X minus expenditure is 2 by 3x. So X minus 2 by 3x will give me 1 by 3x is equal to 1200. 1 by 3x is equal to 1200. So my x will be is equal to how much? 3 multiplied by here. 3 multiplied by 1200. So my x will be 12 3s are 36. 3000
600. This is what? This is my income. X was what? X was my income. So my income is 3,600. Now my expenditure, because in question they are telling monthly expenses. So monthly expenses is how much? Monthly expenses is 2 by 3x. So it will be 2 by 3 multiplied by 3,600, which is coming here. So 3 ones are 3, 12s are 1200 into 2. Answer is 2,400. This is my answer. 2,400. 2,400 is my answer. I'll explain once again. Person spent 66 2 by 3 of his income. आज बड़े में लिखता हूँ थोड़ा सा, है ना? तो expenditure is what? Expenditure is 66 2 by 3% of income. So मैंने क्या बोला? Let income I will take as X. Income को मैं X में ले लेता हूँ. So my expenditure will be 66 2 by 3% of X. 66 2 by 3% of X. जब इसको सॉल्व करोगे 66 2 by 3% को, तो फ्रैक्शन में ये 2 by 3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, X का मतलब X. तो ये कितना आएगा? 2 by 3 X आ जाएगा. This is my expenses. So my income is how much? My income is X. My expenditure is how much? Expenditure is 2 by 3x. And my saving is how much? Saving is 1200. यही तो क्वेश्चन है. Income X है, expenditure 2 by 3x है, saving 1200 है. So my saving, the formula is income minus expenditure. So my income is X, expenditure is 2 by 3x. So X minus 2 by 3x gives 1 by 3x, which is equal to 1200. 1 by 3x is equal to 1200. So X will be 1200 into 3. So X will be 12 3s are 36. So answer is 3600. And this is how I have to solve the question. Answer is 3600. Okay. Those who want to write or take a screenshot can take a screenshot. I will be moving to the next question in a minute. Okay. Let us move to the next question. Okay. I will erase this out. Just a minute, guys. I will just erase this out. ताकि हमको थोड़ी जगह मिल जाए to write these questions. Okay. So let us see the next question. Okay. Please, which one we will do? Okay, question number 6. Let us do question number 6. Guys, just read question number 6. We will start with the solution. Okay. So, I told question number 6. Now, question number 6 is a kind of question which we had done yesterday also. If the income of Ram is 12.5% more than that of Shyam. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. Income of Ram is 12.5, मतलब 12.5% more than that of Shyam. तो अगर श्याम की इनकम 100 है तो राम की इनकम उससे 12.5% ज्यादा है. तो ये कितना होगा? 112.5. 12.5% of 100 gives you 12.5. तो उसमें ऐड करोगे तो 112.5. Then income of Shyam is less than Ram by how much? तो ये कितना लेस है? बिल्कुल कल वाला क्वेश्चन है. ये लेस है, 12.5 लेस है. डिवाइडेड बाय लेस देन दैट ऑफ राम. कंपैरिजन किसके साथ है? राम के साथ. तो यहां आ जाएगा 112.5 मल्टीप्लाइड बाय 100. 12.5 डिवाइडेड बाय 112.5 मल्टीप्लाइड बाय 100. अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो. 125 डिवाइडेड बाय 1125. अब देखिए यहां से डेसिमल, हाउ आई रिमूव डेसिमल. डेसिमल के बाद 1 पॉइंट, डेसिमल के बाद 1 पॉइंट. तो दोनों की जगह एक एक पॉइंट है. दैट इज व्हाई इट इज रिमूव्ड ऑटोमेटिकली. सो दिस इनटू 100. नाउ व्हेन यू विल सॉल्व, ओके, लेट मी कट इट बाय 25. दिस इज 25 5s are 125.
112, 25, 4 जा 100 and 125. तो 5 जा, तो ये 5 टाइम्स, ये 45 टाइम्स. नाउ 5 1 जा 5, 5 9 जा 45. तो कितना आया? 1/9. और 1/9 कितना होता है? 1/9 होता है 11.11%. अगेन कैसे लिख दिया मैंने डायरेक्टली 1/9 को 11.11%? दिस यू प्लीज सी आवर प्रीवियस वीडियोस, उसमें हमने डेसिमल एंड फ्रैक्शन टॉपिक में एक्सप्लेन किया है. When I was taking that topic, I had told 10 times that वो topic बहुत important है fast calculation का. तो those who have not seen, please go back to our previous videos and see. So answer is 1/9 is equal to 11.11%. Now this kind of question we had already done in the last class. Okay, so I am moving ahead. I am moving ahead. Those who want to click a photograph or take a screenshot can take a screenshot. Number 14. Very good question. Number 14 is a very good question. Please read question number 14. 1414. Okay. Question says monthly income of a person was 13,500. यहाँ पे हम लिख नहीं पाएंगे, तो मैं उसको नेक्स्ट इसमें लिखता हूँ. ठीक है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनकम ऑफ अ पर्सन कितना है? 13,500. Okay, no problem. And monthly expenditure is 9,000. Expenditure is how much? Expenditure है 9,000. Income हो गया 13,500, expenditure 9,000. Next year, his income increased by 14%. Wow, that's great news. Income increases by how much? 14%. And expenditure increased by 7%. Expenditure कितने से बढ़ गया? 7% से. दोनों राइज हुआ इसलिए प्लस. अब क्वेश्चन क्या पूछा है? द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स. सेविंग्स में परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, ये क्वेश्चन है. तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि पहले सेविंग्स कितना था. तो पहले सेविंग्स कितना था? 13,500 माइनस 9,000. तो पहले सेविंग्स हुए इसके 4,500. 4500 इज द सेविंग. Now 13,500 से 14% इंक्रीज हुआ. तो हाउ वी विल फाइंड कितना इंक्रीज हुआ? तो वो हम ऐसे निकालेंगे 14% ऑफ 13,500. और इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लेट मी सॉल्व हियर रफ में. 14 अपॉन 100 इंटू 13,500. जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल. नाउ 135 इंटू 14. 135 into 14. How we will calculate first? 135 into 14. Simple calculation से करेंगे. तो ये आएगा 1890. 1890. Okay. Now those students who do not know the trick of how to solve it, उनको ट्रिक भी बताता हूं. इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. 135 into 14. 14 को मैंने ब्रेक कर लिया 10 में और 4 में. Now 135 into 10, 1350 and 135 into 4. So 135 into 2 is 270 and then 540. तो 0 का 0, 5 and 4 9, 5 and 3 8 and 1. Answer is 1890. So 1890 का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है. तो इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? वी विल एड इट अप. तो लेट्स एड इट अप. 0 and 0 0, 0 and 9 is 9, 8 5 13 का 3, कैरी 1, 1 and 1 2 and 3 5 and 1, 15390. And the expenditure increased by 9,000 का 7%. So we will do what? 7% of 9,000. Same procedure. 7 upon 100 into 9,000. Zero cancel, zero cancel, zero cancel, zero cancel. 9 sevens are 63, and this will become how much? 630. Total comes down to 630. Add it. 0, 3, 6, 9. तो अभी सेविंग्स कितना हो गया? 15,390 minus 9630. Subtract 0 and 0, 0. 9 minus 3, 6. 3 becomes 13. 13 minus 6, 7. 5 becomes 4 and that becomes 0. So अभी
पहले का सेविंग था 4500, अभी कितना सेविंग है 4760। तो कितने का डिफरेंस है दोनों में जब माइनस करोगे तो इट कम्स डाउन टू 260। 260 का डिफरेंस है दोनों में, 260 का डिफरेंस है दोनों में। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज इंक्रीज, तो अभी परसेंटेज निकालना है इसका। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा 260। ओके, मैं दूसरे पेन से लिखता हूं कि परसेंटेज कैसे निकलेगा इसमें। परसेंटेज के लिए वी विल डू 260 डिवाइडेड बाय बेस क्या होगा, पहले कितना था वो बेस होगा, ओल्ड वैल्यू, ऑलवेज विल बी द बेस ओल्ड वैल्यू, डिवाइडेड बाय 4500 मल्टीप्लाइड बाय 100। जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, ओके, जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, जीरो कैंसल। सो 260 डिवाइडेड बाय 45, 260 डिवाइडेड बाय 45, तो अप्रोक्सीमेटली देख लेते हैं। 45 टू ज़ा 90, ओके, 45 टू ज़ा 90, 45 थ्री ज़ा, how much it will be 135, 45 four ज़ा 2, 45 four ज़ा 180, 45 five ज़ा 225, okay, and 45 fives are, so it will come something between 50% to 60%, okay, and the answer is 7%, 21%, 28%, and 35%. So there is some glitch in the answer. I think it is misprinted. Yes, last time also we did this question, it was misprinted. Okay, so the logic will be, again we will read the question और इसमें logic कैसे use होगा। Monthly income of a person is 13,500. Okay. Monthly expenditure is 9,000. Great. Okay. Monthly income 13,500. Monthly expenditure 9,000. अब अगला क्या बोल रहा है? Next year his income increased by 14%, expenditure increased by 7%. So the income increased by 14%, expenditure increased by 7%. Okay. तो इनकम कितना इंक्रीज हुआ 13,500 से we will subtract 9,000, तो सेविंग्स कितना आया 4,500, फिर 14% से इंक्रीज हुआ, इट इज कमिंग 1890, एड इट 13500 प्लस 1890, आंसर कम्स 15390। 9,000 rupees is the expenses, increase of 7%, increase by 630, so it will come 9630। अभी डिफरेंस देखेंगे, so 15390 minus 9630, 0 minus 0 is 0, 9 minus 3 6, 3 बन गया कितना 13, 13 minus 6, 6 and 7, okay, 5 becomes 4, 14, 14 minus 9, 14 minus 9 is 5, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ओके ग्रेट। सो इट इज 5760, ये 4760 नहीं होगा, ये 5760 होगा। तो अगर ये 5760 है तो now what will be the difference, 0 minus 0 0, 6 minus 0 6, 7 minus 5 2, and 5 minus 4 1, so it will be 1260 divided by 45, 1260 divided by 4,500 into 100, दो जीरो कैंसिल, दो जीरो कैंसिल, okay, and now by this way we will be able to find the answer, okay। Okay, this way we will be able to find the answer। तो क्या आएगा ये 1260 डिवाइडेड बाय 45, इस तरीके से डिवाइड भी कर सकते हो या डायरेक्टली ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 45। तो पहले ये किससे कट जाएगा 3 से, 3 1 जा 3 एंड 15, 3 5 जा 15, और ये कैसे कटेगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 0 जा 0, अगेन 3 से, 3 5 जा अगेन ये 3 से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 and 0, 140, again 5 से, 5 1 जा 5 and 5 2 जा 10, 40, 8 जा
So this way we will solve the question and answer is 28%. Answer कितना आ गया? 28%. So this is how we solve income and expenditure questions. कुछ नहीं करना है, income निकालना है, expenditure निकालना है, and we have to solve it. Okay, this is the way. If anyone wants to take a screenshot, can take a screenshot. This was a long question. It is not a small question. ये बड़ा question है, लंबा question है. तो इसलिए in these kind of questions you require a bit of time to solve these questions. Okay. Let us move ahead with the next question. Okay. Let us come to question number 19. No, 31. We will do first question number 31. Question number 31. Just read. A saves 20% of his monthly salary. If his monthly expenditure is 66,000, what is his monthly savings? Okay, no problem. Okay, we will do this question first. 31. A saves 20%. Okay, no problem. So saving is how much? Saving is 20%. Okay, so if saving is 20%, if saving is 20%, then what happens? Your expenditure will be how much? 80%, and your income will be how much? 100%. Common है ना यार. अगर saving 20 rupees है, मान लेता हूँ, expenditure 80 है, तो income 100 होगा ना? Correct है. Monthly expenditure is 6,000. मतलब 80% किसके बराबर है? 6,000 के बराबर है. मतलब क्या होगा मेरा? 80% of my income, how much it is? Equivalent to 6,000. मतलब 80 upon 100 into my income is equal to 6,000. So my income will be how much? Income will be 6,000 multiplied by 100 divided by 80. Cancel करो. 0 cancel, 0 cancel. 4 2 से काट लेते हैं. 2 4 जा, 2 5 जा, and ये 4 1 जा, 4 15 0 0 1500 and 1500 into 5. बट हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में? मंथली सेविंग. ओके, पहले इनकम निकाल लेते हैं. इनकम विल बी 1500 into 5. 1500 into 5. So my income will be how much? 15 5s are 75. So my income will be 7,500. Income will be how much? 7,500. And so my savings is how much? Saving is 20%. So 20% of, अभी saving कैसे निकालूंगा मैं? My saving will be 20% of 7,500. इसका 20% निकाल लो तो कैसे निकलेगा? 20 upon 100 into 7500. 0 cancel, 0 cancel, 0 cancel, 0 cancel. 75 2s are 150 and 1 0. तो answer is 1500. ये मेरा आंसर है. 1500. This is my answer. 1500 is my answer. ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं एक ब्लैंक पेपर में. यहां से थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ब्लैंक पेपर से समझेंगे. A saves 20% of his monthly salary. Okay, no problem. 20% है ना, लिख लेते हैं. A जो है वो सेव कर रहा है. कितना सेव कर रहा है? 20%. सो इसका मतलब एक्सपेंडिचर कितना होगा? बचा हुआ 80%. और इनकम कितना हो गया? 100%. 80% ऑफ व्हाट? 80% ऑफ जितना उसने कमाया. 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ जितना उसने कमाया, मींस इनकम. ओके, नाउ व्हाट द क्वेश्चन सेज, इफ हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 6,000. मतलब ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है? 6,000 के बराबर है. चलो बढ़िया है, निकाल लेते हैं. तो 80% ऑफ माय इनकम is equal to 6,000. So my income is equal to 6,000 का उल्टा. तो 80% का मतलब क्या? 80 upon 100. So अब मेरा इनकम कितना आ गया? 6,000 into 100 divided by 80. So my income, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है? It is coming out to be 7,500. ये मेरा इनकम हो गया 7,500. ओके, नाउ क्वेश्चन ये है कि सेविंग कितनी है. सो सेविंग कितनी है? इट इज 20% ऑफ माय इनकम.
So 20% of my income means 20 by 100 multiplied by 7,500. Zero cancel, zero cancel, zero cancel, zero cancel. 75 to 150. तो आंसर कितना आ गया? 1500 is my answer. जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो. आंसर कितना आ गया इसका? 1500 is the answer. 1500 is the answer. इस तरीके से ये क्वेश्चंस आते हैं और इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाया जाता है. ठीक है. नाउ आई बिलीव इनफ ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन, परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन. नाउ वी विल बी मूविंग अहेड विद द मोस्ट फेवरेट टॉपिक, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट. जिसके आगे क्वेश्चंस हैं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के, वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. ठीक है. क्योंकि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ही वो चैप्टर है, वो टॉपिक है जहां से डिफिकल्ट क्वेश्चंस की शुरुआत होती है. ठीक है. मैं एक ग्लिम्स बता देता हूं जो मैं करूंगा अब से नेक्स्ट क्लास में. प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इसका फंडा बहुत सिंपल है. थोड़ा रिवाइज करके आएंगे क्लास 9th की बुक से. इसमें 2-3 चीजें होती हैं जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जितने में हम बाय करते हैं. यहां पे होता है प्रॉफिट या लॉस, फिर हम इसको सेल करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जितने पे हम सेल करते हैं. बट मार्केट में कंपटीशन है तो आपको अपना क्या रखना पड़ेगा? आपको अपना रखना पड़ेगा प्राइस टैग. और जिस प्राइस टैग को हम बोलते हैं एमपी, जिसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, और इसी मार्केट प्राइस पे आप क्या देते हो? आप देते हो डिस्काउंट. दिस इज हाउ द होल फ्लो चार्ट इज, जिसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे. इसको मैं नेक्स्ट क्लास में पहले डिटेल में सिर्फ बेसिक एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे. ये तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, बट अभी बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ. सॉरी, मैं बहुत टेक्निकल वर्ड्स यूज कर रहा हूँ. आपको जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा तो मैं बिल्कुल सिंपल कि आपने, यू आर अ शॉपकीपर, आपने 1000 रुपीज में एक जीन्स खरीदी, यू वांट टू सेल इट एट 1500 रुपीज, तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा? 500 रुपीज का. ये मैं सब एक्सप्लेन करूंगा. अब आप उसको 10% डिस्काउंट पे बेचना चाहते हो, चलो 20% कर लो. 20% डिस्काउंट पे बेचना चाहते हो तो कितना प्राइस होना चाहिए? इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पे. दैट वी विल बी डूइंग. फॉर टुडे वी आर साइनिंग ऑफ. Please go to my previous videos and see about the calculation techniques, calculation methods. This is very, very important. ठीक है. अभी के लिए इतना ही. अब नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट कराऊंगा मैथमेटिक्स में, एंड आपका सैटरडे को लॉजिकल रीजनिंग का सेशन होगा, उसमें आगे के टॉपिक्स आप लोग कंटिन्यू करेंगे. ओके फाइन. तब तक के लिए वी आर साइनिंग ऑफ फ्रॉम बोधी एकेडमी. बढ़िया से रहिए, मस्त एंजॉय कीजिए. ठीक है. न्यू ईयर अच्छे से मनाइए. ओके, एंड गो ऑन विथ योर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस. थैंक यू एंड गुड नाइट.